I just need to set up my iPad. Is this a test or? I think we are there. Okay. Okay, so okay, can you see me, Soham? Yes, I can. And can you hear me clearly? Yeah. So today we'll start with chapter. This is chapter number 9. Some applications of trigonometry. Okay? And Yeah. before I actually start telling you how to do this, I will ask you some questions from the previous class just to check how much you Right. remember. Okay. So I'm doing the screen sharing. Yeah. Before I actually start telling you how to do this, I will ask you some questions from the previous class just to check how much you So remember. you have to tell me the formula of sine Okay. theta in The terms screen of sharing. perpendicular, base, and hypotenuse. Could you Before I repeat how your actually voice is start overlapping? telling you how to do this, I will ask you some questions from Wait a the minute. previous class. Okay, is it okay now? Yeah, I was. Can you Yeah. see the screen? Yep. Okay. So tell me. Sine theta is P by H. Perpendicular upon hypotenuse. Yes. Cos theta. Cos theta is base upon hypotenuse. And tan theta. Tan theta is perpendicular upon base. So perpendicular upon base. Yeah. Okay, very good. And can you tell me what is the reciprocal of sine theta? The reciprocal of sine theta is cosec theta. Very good. So the formula for cosec theta will be? That will be the reciprocal of sine. So hypotenuse upon perpendicular. Very good. What is the reciprocal of cos theta? That is secant theta, which is again the reciprocal of cos theta, so h by b. Okay, hypotenuse. Just form a habit of saying hypotenuse, base, and perpendicular instead of the English letter. Okay. Yeah, What is okay. the reciprocal of tan theta? That is cot theta, which would be base upon perpendicular. All right. Now, next thing is, can you tell me 3 identities which we discussed yesterday? Yeah, it was sine square theta plus cos square theta equals to 1. Okay. And the other one? That would be 1 plus cot square theta equals to cosec square theta. And Very the third one is tan square theta plus 1 equals to sec square theta. तो ये मुझे आप बिना हेल्प के बता रहे हो ना, कहीं से देख तो नहीं रहे हो? No. Oh, very good. That's very impressive. Okay. And now I want you to tell me the relationship between sine theta, cos theta, and tan theta. Right. So tan theta equals to sine theta upon cos theta. Very good. Okay. Now I will ask you a few values and you have to quickly answer me. Okay. I will write down. Can you tell me how much is sine 0? Sine 0 is 0. Okay. Cos 0? Cos 0 is 1. Okay. Sine 45 degrees? Sine 45 degrees is 1 by root 2. Okay. Tan 45 degrees? Tan 45 is 1. Okay. Very good. Sine 30 degrees? Sine 30 degrees is 1 by 2. 1 by 2. 2. And cos 60 degrees? Cos 60 degrees would be 1 by 2. And cos 30 degrees? Cos 30 degrees is root 3 by 2. And
Sine, yeah, sine 60 degrees. Sine 60 degrees is root 3 by 2 again. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है Hmm. कि sin 30 is same as cos 60, cos 30 is same as sin 60. ठीक है, and sin 45 and cos 45 is same. Yeah. So I'm very And happy कि sin आपको 90 गलती सारी and yes cos आपको 0. सारी वैल्यूज याद हैं. I'm very very Yeah. happy. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. Now I'll ask you one more question. Suppose मैंने एक triangle draw किया है. What kind of triangle is this? This is a right angle triangle. Very good. This is a right angled triangle. तो हम जितनी भी अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं फॉर योर सिलेबस वी आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, एंड हमने ऑलरेडी ये जो 6 चीजें हैं ये बेसिकली क्या है, ये रेशियोज हैं. Yeah. रेशियोज, व्हाट काइंड ऑफ रेशियोज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. बट इन रेशियोज के अंदर हमने जो वर्ड्स यूज किए हैं वो क्या है, हमने बोला परपेंडिकुलर, ठीक है, हमने बोला बेस एंड हमने बोला हाइट. इन तीनों को यूज करके 6 रेशियोज बन रही हैं. तो ये तीनों चीजें आ कहाँ से रही हैं, ये एक ट्रायंगल में से आ रही हैं. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसी के परपेंडिकुलर, इसी का बेस और इसी का हाइपोटेन्यूज है जिसके कारण वो 6 रेशियोज बन रही हैं. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ये तो है 90 डिग्रीज, इसके ऑपोजिट जो होता है वो क्या होता है, Hypotenuse. राइट hypotenuse. Which one is perpendicular now? What? Could you repeat? Which one is perpendicular? Perpendicular is AB. So it's a line that's perpendicular on the base, and the base is BC. अच्छा, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें नहीं पता कि ये परपेंडिकुलर है या ये परपेंडिकुलर है, बिकॉज दीज आर टू लेग्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी हियर एंड दे परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये दोनों ही So परपेंडिकुलर, just AB then. ठीक है, तो ये Yeah. दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है और ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है और ये भी बेस हो सकता है. तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन में किसको परपेंडिकुलर मानना है, इसके लिए एक रूल है. हम क्या करेंगे, हम फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं. दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज ए बी सी. आउट ऑफ 3 एंगल्स हियर वन ऑफ देम इज राइट एंगल. ये तो क्लियर है, 90 डिग्री है, इसको छोड़ दो. अब बाकी की जो 2 एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल्स हैं. कैसे हैं, एक्यूट, लेस देन 90 डिग्री. इन दोनों में से कोई भी एक एंगल कंसीडर कर लो, उसको मार्क कर लो थीटा. तो जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे एंगल अंडर कंसिडरेशन, एंगल अंडर कंसिडरेशन हमारा है थीटा, विच इज एंगल ए, इज एंगल ए. ठीक है, जिसका हमने नाम रखा है थीटा. तो जो भी एंगल अंडर कंसिडरेशन होगा उस क्वेश्चन में, उसके ऑपोजिट जो साइड होती है उसी को हम परपेंडिकुलर मानते हैं. तो ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक और राइट एंगल ट्रायंगल लेती हूँ और इस वाले क्वेश्चन के अंदर एंगल अंडर कंसिडरेशन ये वाला होता तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. तो योर परपेंडिकुलर बेस विल वेरी फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन से वाले एंगल में इंटरेस्टेड हैं. ठीक है, ये याद रहेगा. ठीक है, अब हम करने वाले हैं 2 टाइप्स ऑफ एंगल जिसके ऊपर पूरा ये चैप्टर बेस्ड है. एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, डिप्रेशन जैसे वर्ड होता है ना, जैसे एलिवेशन है और डिप्रेशन है, इनके अपने आप में एक इंग्लिश मीनिंग्स है. एलिवेशन का मतलब हो गया कुछ चीज अपलिफ्ट हो गया, हाँ, गोइंग हायर. डिप्रेशन मींस गोइंग लोअर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, हमने एक कोई पॉइंट चूज किया, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, यहाँ से देख रहा है. ठीक है, तो यहाँ से देखा जा रहा है एंड दिस इज द पॉइंट विच इज बीइंग ऑब्जर्व्ड. इसको देख रहे हैं. तो एक ऑब्जेक्ट हो गया जिसको देखा जा रहा है, एक पर्सन है जो देख रहा है. तो अगर जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो नीचे है तो इसका मतलब जो देखने वाला है वो ऊपर देख रहा है.
उसको आंख ऊपर करनी पड़ रही है। Yeah, that's elevation, I'm assuming. हाँ, तो यहाँ पे हमारा एलिवेशन आएगा, बट वो फॉर्म कैसे होगा? जो भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, स्टैंडर्ड रूल है कि आप वहां से हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन गया उसका नाम रख दिया थीटा। दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, मैं इसको एक और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझाती हूँ, फिर हम इसको क्वेश्चंस में रिपीट करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड दिस। सपोज एक और सिचुएशन है, अब यहाँ पे पर्सन है, दिस इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास है पॉइंट बीइंग ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे मैं पॉइंट बोल रही हूँ, बेसिकली इन क्वेश्चंस में टावर होगा, कभी बिल्डिंग होगी, कभी ट्री होगा, कुछ भी हो सकता है, बट हम उसको पॉइंट के जैसी ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, तो अब हम जब देखते हैं तो हम नीचे देख रहे हैं, लोअर साइड पे आ गए। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा कहाँ से बनती है? रूल क्या था? हमेशा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बनती है हमेशा। Yeah. एंगल बन गया इन दोनों के बीच में, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमेशा यहाँ से बनेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी प्लेसमेंट क्या है, वो कहीं पे भी हो, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहीं से बनेगा। ठीक है, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड आपने जो पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है और जिस चीज को हम देख रहे हैं, उन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो आपके पास बेसिकली ड्राइंग में दो लाइंस क्रिएट हो गई, उनके बीच में एक एंगल फॉर्म हो गया। एंड एंगल का नाम डिप्रेशन या एलिवेशन डिपेंड करेगा कि आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप ऊपर की तरफ देख रहे हो या नीचे की तरफ देख रहे हो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आई वॉन्ट यू टू ओपन अप योर बुक, एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम कल। I am just joining. मैं एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर, और उसके बाद फिर आप स्क्रीन पर आ जाओगे और आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस। ओके, Yeah, all right. Example 1. All right. Just join. रेडी? Just 1 second. ओके, सो मैं स्टार्ट करूँ? Yes. Okay, let's read the question. A tower stands vertically on the ground. From a point on the ground, अभी हमारे पास एक टावर है, मैंने ऐसे टावर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, now there is a point on the ground, ये मेरा ग्राउंड है। ठीक है, with the point is 15 meters away from the foot of the tower. ये जो पॉइंट है ये फुट है। Yeah. और यहाँ से कुछ दूरी पर 15 meters away, सपोज कर लेते हैं ये है, तो हम यहाँ मार्क कर लेते हैं, दिस इज 15 meters यहाँ तक। देयर इज अ पॉइंट, इसको मार्क कर लिया A. नाउ अब द क्वेश्चन सेज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब इन्होंने यहाँ पे किसी क्वेश्चन में आपको सिचुएशन दी होगी, आपको ये बताएंगे नहीं कि एंगल ऑफ एलिवेशन है या डिप्रेशन है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड करना होगा। बट यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो इससे हमें पता चल गया, इंफॉर्मेशन मिल गई कि हम पॉइंट ए से ऊपर देख रहे हैं क्योंकि एलिवेशन हो रहा है। ठीक है, एंड कहाँ देख रहे हैं वो हमें पता चला, टॉप ऑफ द टावर। दैट मीन्स ये टॉप ऑफ द टावर है। तो हम जो पॉइंट ए है और जो टॉप ऑफ द टावर है, इनको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, हम हमेशा ये करेंगे कि जहां से देख रहे हैं और जिसको देख रहे हैं उनको ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करनी है।
और Okay. और जहां से देख रहे हैं, पॉइंट ए से देख रहे थे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी थी, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। मैं यहाँ दिखा भी देती हूँ। हमें पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होती है। तब इन दोनों के बीच में जो एंगल बना, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। Yes. ठीक है, तो ये हमारा Yeah. क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ये हमारा एक्चुअली क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर अब हम अपनी डेफिनेशंस लगाएंगे जो हमने अभी ऊपर सीखी थी। एंगल इन कंसिडरेशन कौन सा है यहाँ पे, एंगल ए। तो हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हुआ इस फिगर के अकॉर्डिंगली, इसको बी मार्क कर लेते हैं। That would be BC then. That's Yes, the perpendicular. perpendicular. And which one is Yeah. hypotenuse? The hypotenuse is AB. Yes, and which one is base? B. Base is AC. AC. ठीक है, अब आपको पता चल गया। अब आप ये देखो कि इस फिगर के अंदर आपको आउट ऑफ परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज क्या मालूम है, आउट ऑफ विच वैल्यू डू यू नो? We know the base, which is 15 meters. राइट, यू नो द बेस, एंड आपको ये वैल्यू भी पता है एंगल की अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंड दिस वैल्यू इज Yeah. 60 डिग्रीज। That is 60 degrees. तो अब देखो, हमने कल एक रूल सीखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, आपने इसको माइंड में रखना है। इसके अकॉर्डिंगली Yeah. मुझे पता चल गया, मुझे बेस पता है। ठीक है, बेस पता है, इसका मतलब मुझे या तो ये पता है या ये पता है। मैं और मुझे निकालना है, क्वेश्चन सेज फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि इसके अकॉर्डिंगली मुझे परपेंडिकुलर निकालना है। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है आउट ऑफ द टू विच आई शुड पिक अप, क्योंकि मुझे इसमें से और इसमें से एक पिक करना है, बिकॉज बेस मुझे पता है और परपेंडिकुलर मुझे निकालना है। तो कौन सा चूज करना चाहिए? If we have to find out the perpendicular, it can't be in the formula. So B by H cos. कॉस यूज Is करना that चाहिए, correct? Yeah, cos 60. क्योंकि हमें परपेंडिकुलर निकालना है और बेस पता है। तो ये नहीं यूज करना चाहिए हमें tan। कॉस क्यों यूज करना चाहिए? हाइपोटेन्यूज कहाँ से लाओगे? I ये thought आप it's because if we have to find out B, it can't be in like the formula on one side of the formula, has to be on the other side. सो हम देखो, इन तीनों में से आपको अगर एक वैल्यू पता है तो दूसरी तो आप निकाल सकते हो ना। पर अगर आपको बेस पता है और हाइपोटेन्यूज कहाँ से लेकर आओगे, और परपेंडिकुलर निकालोगे कैसे? इस फॉर्मूला में परपेंडिकुलर एग्जिस्ट ही नहीं करता। कॉस के फॉर्मूले में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आ रहा है, तो हाइपोटेन्यूज तो चाहिए ही नहीं ना हमें। हम ये वाला क्यों चूज करेंगे? हमें तो परपेंडिकुलर निकालना है, हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर। Yeah, okay. All right, so the value that we know plus the value that we need to figure out is the one that we end up choosing. हाँ, So तो tan हमें पॉसिबली वही चूज theta करना चाहिए। हमने ये चूज किया। अब इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। थीटा की वैल्यू 60 डिग्रीज है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस हमारा 15 है। yeah. Now you already know, you have Oh, learned yesterday the value of tan 60. Can you tell me how much is tan 60 the degree? value of tan 60 is 1. हाँ, tan 60 Sorry, no, root 3. श्योर हो ना? ठीक है, Let और me परपेंडिकुलर, double- हाँ ठीक है ये। Yeah, अब okay. Yeah. परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई? 15√3, एंड आगे यूनिट लिख दो मीटर्स। ये आंसर है आपका। All right. So you will write down height of the tower is, therefore height of the tower is 15 The height √3 meters. meters। समझ में आया आपको? Yes. ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं स्क्रीन शेयरिंग छोड़ रही हूँ, आप एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मुझे करके दिखाओ। ठीक है, 9.1 question 1. If I could be let in the meeting so I can share my screen. Is it appearing? No. It says to me the host will let you in soon. अच्छा, okay. Yeah. Okay.
ये आप ना कल से क्लास के स्टार्टिंग में ही करके रखना है, ठीक है? Yeah, I'll do that. Okay, so the question is, a circus artist is climbing a 20 meters long rope, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. So we can already imagine. I'll just draw the rough diagram here. हाँ, आप Um, रफ ड्रॉ करो, आप ऐसे सॉल्व करो एज इफ यू आर एक्सप्लेनिंग इट टू समवन, ठीक है? Yeah, okay. So, yeah, 20 meters long rope, which is from the top of a vertical pole to the ground, right? So this is could be the pole, the rope, and this is the ground, and then the rope is tied from this point to the ground here. It's 20 meters long, so I'll just write this here. And find the height of the pole. Sorry, so to the ground, find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degrees. So from the rope to the ground, this angle here is 30 degrees. And this is the angle of observation. So we know that this is the perpendicular. आप सो हम अपने फिगर में पोल कौन सा है, रोप कौन सी है, ग्राउंड कौन सा है, एक बार मार्क कर दो और ट्रायंगल को नेमिंग कर दो ABC, फिर आप परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज मार्क करो, ठीक है? Okay. This is the ground. So you know that this is the perpendicular. This will be the hypotenuse because this is a 90-degree angle and the sides opposite to it. So this is the hypotenuse. And this is the base because the ground is the only side left. Right. So find the height of the pole if the angle made by the rope for the ground level is 30 degrees. So I'm going to just, एक बार चेक कर लो अपने चेक करो. Sorry. ठीक है. Yeah. Now so we need to find out the height, which is the perpendicular, because now the side could be the height, and we already have been given the hypotenuse. So the hypotenuse is here. We could use any one of these, but we need to find out the perpendicular. So we will use this, which is sine. And we know that 30 degrees, right? So sine 30 is it is 1 by 2. So 1 by sine 30 is 1 by 2. Right, so 1 by 2 equals to perpendicular upon hypotenuse, which is given as 20. Therefore, we know, I'll just multiply everything by 20. And then the perpendicular is 10 meters. Therefore, the height of the pole, the height of the pole is 10 meters. Very nice, सोहम. बहुत अच्छे से किया आपने. समझ आया ना आपको कैसे किया आपने? Yeah. Are you feeling confident that you will be able to do more questions? Yes, I think so. Okay, so try out question number 2 now. Okay. Question 2. A tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, marking an angle of 30 degrees, so that the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground, so where it's bent, so that's touching the ground, I think it's saying, touches the ground is 8 meters, and find the, one second, the distance between the foot of the tree to the point of the, okay, so that's the base basically. To the ground is 8 meters, and find the height of the tree. This is a tree, and it breaks. It's touching the ground. So हम essentially the triangle is just this. Yes, हाँ. अब आप एक line figure बनाओ. Yes. Absolutely correct.
And so the foot of the tree, it's given in the question, the foot of the tree, this is the tree, so this is broken, this is 90 degrees, and this is the ground. It says distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground, so this point is 8 meters. This is 8 meters. Find the height of the tree. It also touches it at 30 degrees here, which will make this the perpendicular. This is the hypotenuse because it's opposite to that, and this is the base. I'm just gonna label it A, B, and C. Oops. Okay. We need to find out the height. So perpendicular again. I'm just gonna write this here. The base is given this time, except and we need to find the perpendicular. So we'll take this, which is tan theta. And the angle is 30. So, you know that tan 30 is 1 by root 3. And the perpendicular in the base. Okay. So 1 by root 3 equals to the perpendicular upon 8. I'll multiply everything by root. एक बार चेक कर लो आपने, मुझे ऊपर का दिखाओगे एक बार। आपको निकालना है क्या हाइट ऑफ द ट्री? तो हाँ ठीक है, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप, निकालो, करो कंटिन्यू। तो यहाँ से आपका परपेंडिकुलर आ गया 8/√3। Perpendicular 1 by 8. Yeah, so 8/√3. ठीक है, अब आपको जो फिगर है ना, वापस फिगर में जाओ हम, शो मी द फिगर अगेन। आपको निकालना हाइट ऑफ द ट्री, but the tree is AB also and AC also. That means you have to find out AB as well as AC and add them. वही तो हाइट होगा ना ट्री, ठीक है? So now that we know, हाँ, now you have to find the height also, hypotenuse also. And we have both the base and we have the perpendicular, and we need to find out the hypotenuse. The base is a whole number, so I'll just take this formula. I feel like we can use this formula as well, but that has it's upon √3. Whichever. So just 8 वाला ले लो, base वाला. So cos theta, and it is 30 degrees again. Cos theta, not cos theta, so cos 30 equals to, I think it is 1, no, so √3 by 2. And the base upon height. So base upon height equals to √3 by 2. And the base is 8, and the height, sorry, not height, sorry, hypotenuse is unknown. Therefore, and that's 2. So h is just equal to √3. Then we need to add the perpendicular and the height. So P plus H equals to height
height is same. सो हम एक बार चेक कर लो, ये पूरा आपने करेक्ट किया है? मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। Is there anything wrong? You're muted if you're saying anything. सो हम चेक कर लो। Yeah, I'm checking. If cos 30 is root 3 upon 2 and tan 30 is 1 by root 3. Both of those are right. And the tan is calculated by p upon b. B is 8. This is correct so far. और नीचे आओ, show me base and bond B hypotenuse. is correct. Cos is root 3, so b minus root 3. And then 8 by h equals to root 3 upon 2. So just make it I think आपने hypotenuse ठीक से oh है। yeah. I'm not that's I'm not sure about it. Cos 30 is this. And that's नहीं, ये correct. ठीक है। See, इस वाले स्टेप को देखो, 8 यहीं रुको। 8 upon hypotenuse is equal to root 3 upon 2, ठीक है? Yeah. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 16 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज आएगा, वेयरएज आपने उसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। How 16 that the denominators are आप क्रॉस multiplied मल्टीप्लिकेशन because yeah. 8 into 2 is equal to root 3 into hypotenuse, ऐसे आ रहा है आपका। This is not h, it's just 1 upon h. Right. 16 upon root 3. वेरी गुड। हाँ, अब ठीक है, अब इसको करेक्शन करो। ठीक है, अब आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करेक्शन करो। और एक और चीज आपको ठीक करनी है, आपने क्या किया, कैपिटल एच को ऊपर लिखा हाइपोटेन्यूज। आप अपने नोटेशंस चेंज नहीं करोगे। परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज ऑलवेज स्मॉल लेटर्स। ठीक है, और जब आप यहाँ पे लास्ट में लिख रहे हो एच डॉट टी, अभी किसी को लग रहा है ये एच हाइपोटेन्यूज है, आपके हिसाब से ये हाइट लिखा है आपने। तो ऐसे नहीं, आपने कोई भी बात अपने मतलब से नहीं लिखनी है, आपको ऐसे लिखना है someone else is going to use this information. Okay? I just thought like ऊपर से then height of 3, so नीचे I would write s. But I'll write height of 3 here. हाँ, अब ये ऐड करो 16 upon root 3 plus 8 upon root 3 और मुझे बताओ फाइनल आंसर। Yeah. The LCM is 24. 1 root 3. That's the height of, I feel like it can maybe yeah, I definitely can be simplified. So that's 8 times root 3 times root 3 upon root 3. These get cancelled, and so the height of the 3 is 8 root 3 meters, right? Yeah, meters. Therefore, the height of the 3 is 8 root 3 meters. अब बिल्कुल ठीक किया है। सो हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। Yeah. The third question is
A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meters and is inclined at an angle of 30 degrees to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meters and inclined at an angle of 60 degrees to the ground. What should be the length of the slide in each case? Right. So for slide 1, I'll just slide 1. A, B, C, and here the slide. So obviously it's a slide. The ladder is going to be here, and the actual slide is going to be this, which is said in the question as 1.5 meters. This is also the hypotenuse. The angle, it's inclined at an angle of 30 degrees to the ground. So this is 30 degrees. And therefore, this would be labeled as the perpendicular and this is the base. Is any other value given? Yeah, this is all that we have for slide 1. And we need to find out whose top is at a height of 1.5. So 1.5. This is the ladder is. We need to find out the length of the slide. So we have 2 slides, okay? So you will Yeah, need this to is slide 1. 2 figures, yes. Yeah. Right. And because we need to find out the hypotenuse, we will take one of these 2 formulas, and we have for the perpendicular given, so we will use sine theta, and we know that sine 30 degrees is 1/2, and that's b upon, that's perpendicular upon this equals to 1/2, except we know that the perpendicular is 1.5. Right, so it's 1/b equals to 1/2 times 3/2. So b will 3/4 equals to 1/b. B equals to 4/3. Is that right? ठीक है, आगे करो. Next. Yeah. Slide 2 now. I don't know if this is. Okay, I did something wrong here, because according to this proportion, B should be. If you have feeling that it is not okay, you can revisit, check all your steps again. What? If you're not feeling confident, check your steps again. Yeah. So I got it. I know. तुम्हें पता है कहाँ mistake कर रहे हो तुम बार बार. Suppose ये वाला step था 1.5 b is equal to half. आप सिंपल क्या किया करो, लास्ट क्वेश्चन में भी यही मिस्टेक था, अभी भी फिर से वही मिस्टेक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में. ठीक है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दीस स्टेप्स. Slide 2. Slide at a height of 3 meters. So the height is just going to be 3 meters. Again, I'll just label this as ABC.
It's another diagram, so it doesn't matter. That's 90 degrees. And it's the height at 3 meters. It's inclined at 60 from the ground. This is the perpendicular, this is the base, this is the hypotenuse. We need to find out the hypotenuse. So again, we will use, I think, sine, which is perpendicular upon, sine is b. We need to find, yeah, so p by h. We'll be using sine theta, sorry, sine 60, since we know it's that angle, and we know that sine 60 is root 3 by 2, which means that the perpendicular upon, sorry, perpendicular upon the height, the height, no, hypotenuse, sorry, equals to root 3 upon 2. Yeah, I can label it now. Yeah, this should not, b is not able equal to 3. We know perpendicular is 3. It's 3 upon hypotenuse equals to root 3 upon 2. Therefore, 1 by height equals to root 3 upon 2 times 1 by 3. We know that that's it. Yeah, root 3 times root 3. Therefore, the hypotenuse, or the slide in this case, is 2. I doubt this is right, actually. What's your answer? Slide 2? I'm getting 2 Yes, root 3, but correct. that can't be right. This is correct, sir. It is? Yes. But it's saying 2 root 3. So the value of root 3 is approximately 1.73. So 2 into 1.73 will be, you have to find out it some number more than 2. And we can't leave it like 2 root 3, like we can't write in the we can, answer but that I think we have to compare now. No, we don't have to. So we can leave the answer like this. You have to put the units if there is any. right. So Therefore, meters. No? yeah, slide 1 is I think 3 meters. Yeah. Slide 1 is 3 meters long, and slide slide 2 is 2 root 3 meters long. Question 4. Very good. Well done. So I'm so happy. Now question number 4. Yes. Question number 4. Right. So the question says the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground is which is 30 meters away from the foot of the tower is 30 degrees. Find the height of the tower. So I'm going to draw the diagram. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground. This is the top of the tower. This is the ground, and this is the yeah. So diagrams are going to be something like this. Top of the tower
from a point on the ground. It's very simple. Yeah, So just it's mention. 30 meters. Yes. There's A, B, C, Hmm. tower. What is it? It's an angle of elevation. So this is not really this is perpendicular. This is a Mhm. hypotenuse. So it's not really anything. It's a We very can't say the hypotenuse is anything. This is the tower. That's Hmm. just the ground. We'll have to label it always like this is the tower and this is the No, ground. no. But if you don't label it, you have to write a statement that let BC be let AB be the tower. Okay. And, so it is up to you. You want to write in a statement form or you Alright. want to say that. I think I just got do this. So the base is 30, right? We need to find the height of the tower. We need to find P. And yeah, the this is the base. I'm just gonna write it. But we know what the base is. We can use both of these formulas, and we need to find the height. So it could be any of these, except we don't know the hypotenuse. We have to use this one, just tan theta, Hmm. and it's 30 degrees. So tan 30. Don't write capital T, write small t. Okay. It is important to maintain that capital and small letter formations. I think I wrote capital letter every time and all the other ones. I'll write it on those. And now onwards, just take care. Yeah. So tan 30 we know is, I think it's 1 by root 3. Therefore, because tan is perpendicular upon base, the base is so perpendicular upon 30, since we know the base is 30, equals to 1 by root 3. I'm gonna bring 30 to the other side. We're gonna leave the base here. Base is 1 by root 3 times 30. 1 by 30 becomes 30 and p by 1 becomes p. Yeah, I think that's correct. Which also just means 30 upon root 3, except it can be root 3 times root 3 times 10. Root 3 times root 3 times 10. Therefore, these cancel out and we have the perpendicular as 10 root 3, which is the height of, the height of the tower. Therefore, the height of the tower is 10 root 3 meters. I'm very happy, Soham. आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है. मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने सारे क्वेश्चंस करेक्टली खुद किए हैं. So this is really impressive. So we'll close the class, and your homework is to do the remaining questions and the remaining solved examples. I want you to do all the solved example first and then do the exercise. Okay. And so if question 5 to question 16 and examples 2 all to yes, 2 onwards. yeah, okay. And Alright. the order you will follow. First, you will do the examples and then you will do the exercise. And in case you have doubt, you have to just drop me the question number or the example number on my WhatsApp, that these are the questions in which you have some doubt. Okay? Yeah. Okay, so today is Tuesday. You want a class day after, or I think day after is better because these questions will take some time. So we'll do class day after. Most of the questions, yeah, okay, sure, day after. Tell me, what do you want? You want it tomorrow? Really anything works because I can have a class any day of the week except for Saturday. So whatever, it's done. Whatever fits your schedule. Okay, so we'll review tomorrow in the evening. Most probably we'll do it tomorrow in that case. Okay. Okay. Because I'm assuming that tomorrow's class will be taking your doubts. I think we'll dedicate tomorrow's class also to this chapter. Will clarify your doubts. In case you don't have any doubt,
which I'm not expecting, but in case, then tell me what chapter do you want to start tomorrow? Okay. Can I check my test syllabus just real quick to Yes, see? yes. Circle the thing. Okay. In case you do not have any doubts, we'll do circles. Otherwise, we'll take up your doubts. Yeah.